LinkedIn is often regarded as the best place to find clients if you are a freelancer or selling a service. But इंटरनेट पे काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, सो आई विल गो थ्रू सम वीडियोस टू शो यू व्हाट रियली वर्क्स। आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा ऑटोमेशन का तरीका जिसके थ्रू आप हाई कैलिबर क्लाइंट्स फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएस आप उनको क्लोज कर सकते हो। ये सारी चीजें होने वाली है बस एक टूल की हेल्प से, हे रीच। अब देखो सबसे पहले ना यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखो ऑलरेडी मेरे बहुत से कैंपेन्स चल रहे हैं। हमने लिंक्डइन खोला, लिंक्डइन खोलने के बाद में हम यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे। जैसे ही हमने सर्च किया यहाँ हम जाएंगे पीपल के ऑप्शन में, हम यहाँ पर लोकेशन सर्च करेंगे। चलो एंटायर यूके कर लेते हैं, ठीक है, यूके कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम 100 रिजल्ट्स में क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे हमने इसको किया थर्ड डिग्री कनेक्शन, तो आप देख सकते हो हमारे सामने में सारे के सारे ऐसे फाउंडर्स एंड सीईओज आ गए हैं जो थर्ड डिग्री कनेक्शन में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो लिंक है, जो यहाँ पर लिंक हमने यूज की है, ये लिंक को हम कर लेंगे कॉपी एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है हे रीच, एंड यहां पर जाके हम सिंपली इसको कर देंगे पेस्ट। अब क्या होने वाला है, अब ये टूल आपके सारे के सारे जो हमने अभी मतलब रिसर्च की थी ना जितने भी लोगों का, उसकी लिस्ट बनाना चालू कर देगा। जितने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो उनको क्या करेंगे, उनको हम करेंगे लाइक पोस्ट, एक दिन बाद उनकी पोस्ट को लाइक करेंगे, उसके बाद में उनको हम सेकंड मैसेज भेजेंगे, ठीक है। फिर से हम उनको सेकंड मैसेज भेजेंगे। सेकंड मैसेज क्या भेजना है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। फर्स्टली यहाँ पे थंबनेल मिसलीडिंग है। Hey Reach is not a tool for closing clients, it's a tool for reaching out. Secondly, this method is more applicable for agency owners and not much for freelancers. You know यहाँ problem क्या है? This tool writes AI generated messages जो काफी generic होता है। Now if you want responses, then you need to write personalized messages. For example, मुझे अभी recently एक Shark Tank कंपनी से response मिला because my message was hyper personalized. So the real truth is this person is using an affiliate link and promoting the product. तो जब इसको तुम परचेज करोगे तो उन्हें एक कमीशन मिलेगा, बट दिस इज अनएथिकल बिकॉज इन्होंने कोई डिस्क्लेमर ऐड नहीं किया। सो माई सजेशन इज भले ही तुम कम मैसेजेस भेजो बट मेक देम हाई क्वालिटी एंड पर्सनलाइज्ड इफ यू वांट टू गेट रिस्पॉन्सेस। Front door and just using the job search functionality inside of LinkedIn. So here's how this works. You're going to go up to the LinkedIn search bar and you're going to type in a search term, let's say motion designer. You're looking for jobs. So we're going to come up and click on jobs. You can see that there are 2,471 results for jobs. Take them down. Let's look for jobs posted in the past week and then show those results. Now we have 722 results in the United States for motion designer. Well, the way I like to look at it is if a company is looking for a full-time motion designer, chances are they also need freelance help from time to time. Finding jobs and opportunities on LinkedIn is great. इसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था. But I would also like to add that growing your profile organically can also do wonders for you. If you're finding this video valuable, hit on the subscribe button so you don't miss out on more content like this. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया है वेब डिज़ाइन कंपनीज इन यूएसए। अब यहाँ पर जो पहली कुछ एड्स आ रही होती हैं, लेकिन किन लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ग्रो होना चाहती हैं, वो ये ऊपर वाली 4 कंपनीज है जिन्होंने गूगल को पैसे दे के यहाँ पर अपनी ऐड लगाई है। अब ये एक कंपनी है जो वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइन की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को सेल करती है और आप उन्हें ये कहेंगे कि मैं इस कंपनी का पार्ट बनना चाहता हूँ, मैं कम पैसों में आपके लिए रिमोटली काम करूंगा अपने घर से बैठ के, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शो करना है, अपना बताना है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। आप इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल पढ़ सकते हैं और स्टोरी जो है वो आप रीड नजर आ रहे हैं। आपने लिंक्डइन पे क्लिक करना है, वेब डिज़ाइन के कीवर्ड के ऊपर ऐड लगाना, और वो भी यूएसए के अंदर काफ़ी कॉस्टली होता है, तो मतलब ये कंपनी काफ़ी स्पेंडिंग कर रही है। आप यहाँ पर आपको कोई जो जॉब है वो अच्छी नज़र आती है, सीनियर एसईओ स्पेशलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैं होता और मैं एसईओ स्पेशलिस्ट होता तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता। डेनिस गोंजालेस आपके पास आ रहा है जो कि सीईओ है इस कंपनी का। आप यहाँ पे कनेक्शन इसको सेंड कर सकते हैं और आपने इसे बताना है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप किस तरीके से इस कंपनी को ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको बेनिफिट दे सकते हैं और वो भी कम पैसों के अंदर। दिस इज एक्चुअली अ नाइस स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट वर्क। पहले तो आप चेक करते हो गूगल पे कौन एड्स रन कर रहा है एंड देन उनके लिंक्डइन पे जाके आप उन्हें पिच करते हो, एंड सिंस वो एड्स रन कर रहे हैं उनका बजट होगा ही। We just signed a $2,000 per month client in our agency and this lead came from LinkedIn. Are my 4 pro tips for you. Number 1, if you're
you're trying to get clients on LinkedIn, your content has to be amazing. A great bio, a great cover, and all of that optimization helps. But if your content does not support all the things that you claim, nobody is gonna hire you. The second tip is, whenever you are making a piece of content, make sure that it's interactive. Just leaving a CTA for people to comment, because LinkedIn values comments are a lot. Third, a lot of people post and ghost. They don't interact with other people. They are not interacting with their prospects, not fellow people on LinkedIn, and they are expecting others to discover them. It does not work that way. You have to sow the seeds to reap the benefits. And fourth, please be consistent. I have students coming up to me and telling me that, hey, I'm not getting leads after posting twice. And that is not how it works. These are actually all legit points, but अगर एग्जाम्पल के साथ समझना है then check out my last video जिसमें मैंने केस स्टडी बना के समझाया था. Most people struggle to get clients on LinkedIn because they sound like everybody else. They go out, they may say, hey, looking to connect, looking to network, hey, like adding professionals to my network, and then they connect and go, hey, would you like to grab a coffee and maybe, hey, check out all these services I do, social media and content marketing. If you ever have need, please let me know. And the reality is decision makers, those with money, those with budgets, they have a lot going on, and if you can help them, be very clear, very straightforward how they do that, and be specific to them. For example, if you're targeting real estate agents, you want to say, hey, I can help real estate agents in Southern California get 10 to 15 listings a month, or whatever that would be, in 90 days. Would it be worth 15 minutes of your time to learn more? You see, I'm being very direct, I'm being very specific to them, and I'm having a strong call to action. So they can say yes, or they can say no to that, but guess what happens when I do get 5 out of 100 I talk to say yes to that call? They turn into clients. So that's how you get leads and clients on LinkedIn. This is indeed a really good advice. In fact, मैं खुद भी यही करता हूँ. As you can see, I send very specific messages and I also send ROI reports to my prospects कि कितने leads आ सकते हैं कितने time में. Because if you are not specific, you cannot grab the attention of a busy founder. As you can see, tips देने वाले बहुत gurus हैं, but many of these tips do not work. So if you're starting out, shortcuts मत ढूंढो. LinkedIn पे अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड prospects select करो and personalized way में pitch करो. If you have made it this far, then click on the left video to learn more about LinkedIn growth. Otherwise, click on the right video if you're struggling to get your first client.